Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra show. Today we are going to have our 109th episode with Mr. Vivek Atray. बहुत देर से मेरा मन था कि physically, we could have Vivek Atray on my show. In my first episodes from 1 to 100, we also had him. तब COVID का time था. And now today I have him in my show. So first of all, let's welcome him. Sir, welcome to the show. Thank you, Mandeep. I'm delighted to be here. I think I don't need to introduce him. Already, we have a great association. Everybody knows about him. He is an ex-IAS officer. He's a TEDx speaker. And I think सबसे ज़्यादा TED Talks जो सर आपने दिए हो सकता है आज मेरा मन था कि हम ऐसे टॉपिक को शो पे लेके आए कि जिससे we could help all the potential writers who want to come in the field of writing. सबसे अच्छा मुझे लगता है कि I don't know anybody कि मेरे सर्कल में जिसको मैं अपने शो पे बुला सकती. Today we will be taking the topic how to publish your own book or how to become an author. So first, sir, question I have that how was your beginning journey of being an author? कब आपने सोचा कि मैं भी लिखूं और publish हो? I started writing in school. Write some short stories. I was very fond of reading. जो किताबें पढ़ते हैं वही लिख सकते हैं. तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी. मुझे लगा कि I should write. So I had a bet with a boy in school. Bet was chocolate was the prize. He said, "Can you write a 40-page story by tomorrow?" तो मैं लिख दूंगा. कहता मैं चॉकलेट दूंगा. मैं ठीक है. So when I wrote that story and took it back to him next day, he says, "No, you have got 3 pages of drawings." 37 pages थे. But he still gave me the chocolate. I was very happy. Then I started writing more and became more of a writer. Then I went to college and wrote in the college magazine. That's how my journey started. And my wife to be Nina, she also was there and she told me you write well, and I was more excited. I used to write more. Then one day I became a newspaper author in the sense that it was published in the paper. Then I never looked back. 100 times my articles have appeared in the newspapers. And I wrote my first book in 2011, Move On Bunny. Yes. From there, that's my next question. You have published 4 books, and can we know a little about some of your books? Yes. And how they are different? Yes. So I started writing humor. So my first little writing in newspapers, middles जो होते हैं, Tribune में, Hindustan Times में, even Times of India में छपते थे, तो they were humorous pieces. So first I became a humor writer, and I used to love an author called P.G. Woodhouse, who writes beautiful humor. So I used to try to write like him. So हुआ क्या कि Move On Bunny was a humorous book, my first one. And it's about a young boy who keeps roaming around here and there, going to different cities. And then he has different jobs, different relationships. He's not very steady, stable. In fact, एक movie आई थी, if you remember, ये जवानी है दीवानी. Ranbir Kapoor's name was Bunny. उससे पहले मेरी book आई थी. So my sister calls me up after the movie, watching the movie. भैया इन्होंने आपकी बुक में से आइडियाज लिया हुआ है. मैं कहा कहाँ पे? So I went there. Of course, 2 ideas were there, but not from obviously. बनी उसका नाम था. वो था बड़ा ये ट्रैवल वाला बंदा जो मेरी बुक में भी था. So that was the first. The second was called Dubeji Bounces Back, which was also humorous but little more romantic, little more about careers. How Dubey, a young lad, Raghav Dubey, banker, he became a bouncing back kind of person. वो ज़्यादा दुखी होता था पहले शुरू में, emotional type. Then he became strong and he bounced back and succeeded. So it's a good lesson for everybody. Right. Third was finding success within. It became more of a motivational book. Because I started speaking in various places, I thought the book should go with my talks. So that's what happened. So finding success within is the third. And the fourth is It's Still a Wonderful Life, which is a collection of my column in Hindustan Times. 120 pieces usme. That's also feel good book. Great. These are the 4. Right. What are the major kinds of writing? कुछ तो मुझे पता चल गई है कि they are inspiring stories, they are humor. Kind of writing की अगर बात करें, major kinds की बात करें तो what are the major kinds of writing, ताकि मेरे जो audience है वो feel कर सकें या they can relate to कि what kind of writer I am. So सबसे पहले तो fiction and non-fiction में divide करना होगा. Fiction is a story, imagination. Non-fiction is reality. तो अगर मैं लीडरशिप के बारे में लिखता हूँ या मैनेजमेंट के बारे में या IAS के बारे में, so that is those are my fields. So it's non-fiction. But if I make it a story,
that a young IAS officer started his career. फिर एक politician named Ramlal was there. Then some Banda Singh came. Then somebody else came. So it becomes a little more imagination. तो fiction, non-fiction दो type. Non-fiction में you can write autobiography. You can write somebody else's biography. You can write about a topic like artificial intelligence, cryptocurrency, world economy, agriculture. These are non-fiction books. Fiction में you can write romance, you can write mystery, you can write horror, you can write humor, you can write society books. So I think these are the kinds of books you have to find your path. And another distinction, one more, prose and poetry. Prose is writing text, long essays, stories, words, and poetry is poems. Right. That's another way. Right. Art of writing the humor. वैसे तो आप स्टेज पे भी हंसा देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देख के बंदा जज नहीं कर सकता कि आप स्टेज पे हंसा देंगे, जो लास्ट टाइम हुआ था जब हम अपने सब फाउंडर्स में थे, एंड आई एम श्योर कि बुक में भी आप ऐसे करते होंगे. सो हाउ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन राइटिंग ह्यूमर? So you had a very good point you made. If somebody is by nature a funny kind of person, then you expect humor from there. तो फिर आप थोड़ा expect कर रहे हो तो वो उसको lightly लेते हो. जो थोड़ा serious type personality है, वो जब humorous होता है तो that has more impact. Anything you do rarely, human beings are like that. They get used to something, then they take it for granted. तो humor वहाँ से अगर आए जब आपकी personality otherwise बड़ी, जैसे मैं हूँ तो मैं I am not taken lightly, but when I make a humorous comment they like it. So writing humor is like that. I cannot go on writing jokes every page. Right. तो मैंने एक passage लिखा, कोई मिला bus stop पे, and then let's just go through the passage. I had a conversation with him. Suddenly I discovered that he loves collecting eggshells, money. It's something very unique. So then you colorful eggshells, वो उसने album बना रखी है या display बना रखा है, faces वाला. So then you realize that there is so much more to life. I'll give you one more. So somebody was calling me up. And I was busy. I texted him, but he's an older person. He doesn't see the text. He keeps calling me. होता होगा आपके साथ भी. Yes. मैं तो text डाल दिया कि I'm busy today. Now when I texted him, I get an automatic reply. So and so bus service, come as a customer, go as a friend. तो मैं जब भी उनको लिखूँ I'm busy today, वो automatic message आता है. Humor है. तो real life में humor हमें ढूंढना है. That is the thing. बिल्कुल. सबकी ना एक तमन्ना होती है कि मैं ऑथर बनूं, मेरी बुक आए. अगर हम नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज को भी ले लेते हैं तो लोग पोइट्री बहुत लिखते हैं, बड़ा कुछ लिखते हैं. व्हाट इज द स्टेज कि जब किसी को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि हाँ मैं अब तैयार हूँ कि मैं कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग तो फॉर द सेक ऑफ करते हैं. कई बार फिर रीडर्स का भी इंटरेस्ट लूज होता है कि इसने फॉर द, जैसे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव कर दिया, ठीक है, इट डजंट मैच विद द व्हाट इज रिटन इनसाइड इट, वो बिजनेस एंगल दे दिया. सो राइटिंग इज आल्सो एन आर्ट. इसकी रिस्पेक्ट भी वैसे होनी चाहिए. खुद को कब एक्नॉलेज करें कि आई एम रेडी टू बी एन ऑथर? That's a very good point you made. I have a TEDx talk on read more, write more. I think everybody should write. अगर आता है आपको लिखना तो लिखना चाहिए. तो कब रिकॉग्नाइज करें से पहले ये कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि हर आदमी के अंदर एक स्टोरी है, बैकग्राउंड है, कोई पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ, अपने साथ कुछ हुआ, जॉब हुआ, रिलेशनशिप हुआ, हाउ यू मेट योर स्पाउस टू बी, हाउ यू मेट योर फर्स्ट बॉस, ऑल दीज आर स्टोरीज. सो एवरीबडी कैन राइट. व्हेन डू यू राइट? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट. बुक लिखने से पहले यू हैव टू राइट शॉर्टर पीसेस, 1 page, 2 page, 3 page. Poems भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया. Some people they write and they keep it with them. ये बहुत करते हैं कि जब कुछ सही टाइम होगा तब दिखाऊंगा, तब तक खुद चाहे रहे ना दुनिया में. अच्छा होता क्या है कि कई लोग रोमांटिक लिखते हैं, फिर वो शाय फील करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी है ना, अनमैरिड है तो भी शाय है, मैरिड है तो और भी ज्यादा शाय है. So then they don't express it. But then if you publish it, society will always like it, unless you have written something very scandalous type. वो नहीं लिखना, but अच्छा creative कुछ लिखोगे तो हो जाएगा. तो fiction, people write very imaginative stories. कहाँ से कहाँ निकाल के लाते हैं. एक ने story लिखी recently in a game room in a casino. वो पूरी story casino के एक room में कि कैसे वो characters हैं और वो कैसे बदल रहा है उनका mood रात भर. एक ही रात की कहानी है. So I think that is something which we should appreciate. So we get to know that we can write a book when we have practiced, and when people start liking our short pieces, then you can say कि हाँ अच्छा appreciate हो रहा है, अब मैं book लिखता हूँ. I read non-fiction.
एंड आई वॉच नॉन फिक्शन. जब भी कोई मूवी भी आती है ना, तो पहले मैं यही मेरा होता है कि ये ट्रू स्टोरी है तो तभी मैं देखूंगी. अदरवाइज जो फिक्शन है मुझे लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा. और जब मैंने फिक्शन तो पढ़ा की अगर हम बात करें तो आई हैव नॉट रेड अ सिंगल बुक एवर इन माई लाइफ. जिनका थॉट प्रोसेस मेरे तरह है कि वो न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में हो रहा है ओरिजिनलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट दे आर लूजिंग. आई थिंक इमेजिनेशन इज समथिंग दे नीड टू एक्सप्लोर. होता क्या है, डे ड्रीमिंग आपने की होगी, सब करते हैं. When we were teenagers, everybody daydreaming, I will become like Amitabh Bachchan, I will become like, Alia Bhatt or whatever it is. That daydreaming is imagination. अगर हम उसको लिख देते हैं तो वो fiction बन गई, story बन गई. But if you don't want to write stories like that or even read books like that, and you read only non-fiction, you are much better than other people who are reading nothing. So non-fiction also has so many plus points. You learn. अब जैसे I may not be interested in, let's say, Vietnam. War हुआ यूएस के साथ, फिर उनकी सोसाइटी कैसे डेवलप हुई. बट इफ आई रीड अ बुक ऑन वियतनाम, माय ओन होराइजन एक्सपैंड्स कि मैंने ये नई चीज सीखी. फिनलैंड में ई गवर्नेंस टोटल है, ऑल एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक. इफ आई रीड अ बुक ऑन फिनलैंड्स ई गवर्नेंस, देन आई विल लर्न मोर. सो नॉन फिक्शन इज ग्रेट, नो डाउट. बट इफ आई ब्रिंग इन फिक्शन, देन माय इमेजिनेशन आल्सो एक्सपैंड्स. I can think beyond it. इसके आगे क्या हो सकता है? उसमें साइंस फिक्शन भी होता है. आपने स्टार वॉर्स का नाम सुना है, स्टार ट्रेक का नाम सुना है. वो स्पेसशिप जा रही है, वहां पे प्लेनेट में कोई अजीब से लोग मिल रहे हैं, वो इमेजिनेशन. सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. राइट. हम बुक पब्लिशिंग की बात करें, सपोज मेरा कंटेंट रेडी है, मैंने किसी को हायर कर लिया या खुद मैंने कुछ लिख लिया है. सो व्हाट इज अ 3 or 5-6 स्टेप प्रोसेस कि बुक पब्लिश के लिए कैसे जाए, पब्लिशिंग हाउस कैसे डिसाइड करें, किसको अपने साथ एसोसिएट करें. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ बुक? This is a very important question for all young writers. What is important is that you have 3 roles. First role is to write. Right. Second role is to find the publisher and get it published. अभी मैं उसको डिटेल बताता हूँ. But the third role is that you brand and promote your book. एक बार पब्लिश हो जाए, वो पब्लिशर उतना प्रमोट नहीं करेगा. You become the ambassador of your own book. Interviews करो, YouTube बनाओ, try and get a photo in the paper, Facebook, etc., whatever you can do. जो part about publishing it is the most difficult, you're right. क्योंकि publisher के पास इस time 500 manuscripts per day आ रहे होंगे, top के पास. So many people are writing. So I would say that you have to make a very good forwarding letter. उसके पास वो 500 या 300 पेजेस पढ़ने का टाइम नहीं है. वो आपकी ईमेल पढ़ेगा. वो ईमेल अगर आपने अच्छी लिखी होगी तो आपकी बुक भी पढ़ेगा. फर्स्ट वो देखेगा ईमेल ही ऐसी मतलब एवरेज सी है, तो वो ही डज नॉट गो बियॉन्ड दैट. सो टू बी पब्लिश्ड, यू राइट अ गुड ईमेल विद अ फॉरवर्डिंग अटैचमेंट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट. एंड व्हेन यू राइट अ वेरी अट्रैक्टिव ईमेल विद अ टाइटल अगर आपने ऐसा रखा कि जो बड़ा अट्रैक्टिव है, तो पीपल विल एनीवे, लाइक अ नेम अट्रैक्ट्स. So then once you have done that, then the publisher responds to you. You send more material, talk to the publisher. मुश्किल होता है. आजकल सेल्फ पब्लिशिंग भी हो रही है. ये राइटिंग के बाद कह रहे हैं आप? राइटिंग के बाद. बट कई लोग हाफ वे भी शुरू कर देते हैं पब्लिशर ढूंढना कि मेरी बुक अभी 2 महीने बाद कंप्लीट होगी, पर मैं अभी से टू सेव टाइम. पर वो पब्लिशर विल आस्क फॉर योर सैंपल चैप्टर्स. वो भेज दो तब तक, फिर बाद से. फाइनेंशियल एंगल क्या होता है? फाइनेंशियल एंगल आजकल क्या है, पहले होता था कि द पब्लिशर विल बेयर द कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन. नो, नथिंग टू बी पेड बाय द ऑथर. ओके. एंड व्हेन द बुक सेल्स, ही विल पे यू 10% और 12% रॉयल्टी आल्सो. वो थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, कितनी बुक्स छपी, कितनी बिकी, कितनी डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिशर और ऑथर में होता है वर्ल्ड ओवर. But nowadays it is very, very rare that the publisher does that. Luckily for me, all 4 books were done like that. Now 50% of the cost is borne by the author. Okay. And 50% by them. There are many publishers and who then do also they do selection. मैं खुद अपना पे कर रही हूँ, फिर भी then it becomes easier. Then they accept. Because money is coming, so they accept. But they do see a little bit of quality. More good publishers will see that. हम पब्लिशर चूज करते हैं and then we have to take care of the marketing and sales. और marketing sales में आप quickly you can tell us 4-5 points कि जो आपके मन में आ रहे हैं. Marketing sales में क्या है कि पहले अपना ब्रांड बनाना है. The book is not as important as the author. बुक तो बाद में पढ़ेंगे ना लोग. अगर आपका ब्रांड है, जैसे आपका मंदीप आपका ब्रांड है, you have your show, you are known on the social media. Luckily even I am similar, I have my presence. So what happens, you write a book
already they don't need to know the author. Author तो उनको पता है कि मनदीप है, we know Mandeep. So your book will be easily marketed. Then you'll appear in social media with your book. Then you'll appear on stage. Then you'll talk about your book in subtle ways in your show, etc. Logo आएगा, उसकी picture आएगी. So marketing will be about social media and about media. तो आपके बारे में मुझे एक बात याद है कि once you posted on your Facebook कि मैं इस स्टोर में आऊँगा अपनी बुक्स के पास and then you can get signed copies. तो मुझे बड़ा ना वो कनाडा यूके वाली फीलिंग आई, अमेरिका वाली कि अच्छा ऑथर खुद आ रहा है and then I could have signed copy. तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. वो अच्छा था. हाँ. इनफैक्ट एक और इसमें ऐड कर रहा हूँ. I went to Bangalore to visit a store and I asked them, do you have my book? They said yes. Luckily. Okay. And it was a big publisher at that time. And my book was lying just next to Sachin Tendulkar's book in the rack. तो मैंने तो फोटो खिंचाई उसके साथ. मैं कहा देखो कम से कम कहीं तो पहुंचे. Yes, that's great. How you are helping the authors? आप भी मेंटर कर रहे होंगे, you have come up with 4 books. जब कोई PhD कर लेता है फिर सारे उससे PhD करते हैं. ठीक है, मैं भी लाइन में खड़ी हूँ. So it's like how you are helping the potential authors. So one is we have a Chandigarh Literary Society, CLS, which is making young authors members or writers जो अभी author नहीं भी बने. And then we have workshops. For example, recently we had a book reading workshop. Okay. कि आप ऑथर बन गए उसके बाद आपको जाके ना बुक में से पढ़ना पड़ेगा अलाउड. लिखना एक चीज है, बोलना एक और चीज है. तो then some people cannot speak that well. So practicing that. Right. Then how to complete your book. Some people are not able to finish it. So आपका flow अच्छा चल रहा है, but then they forget to how to complete it. That is also important. So I am mentoring them through CLS. I am also mentoring many directly. Like if somebody meets me who's very bright and sharp, I feel that they should write a book. I tell them, why don't you write a book one day? Yeah. Sir, मैं काम book लिखूँ. नहीं लिख सकते हो. Encourage करूँगा. Yes, encourage. And then if everybody has a story. और फिर अगर किसी ने थोड़ा बहुत लिख के भेजा, then I can definitely tell them that you can write one little page. You can write 100 pages also. Yes. So I've encouraged a lot of people. Some of them have agreed with me. Some are still thinking. एक ना बुक में होता है कि बेस्ट सेलिंग बुक्स. कभी इस पे रिसर्च किया आपने कि बेस्ट सेलिंग बुक्स क्या होती हैं? So it's like a movie. Best selling book can be a masala book. Now Chetan Bhagat is a top author. He is very frank in saying कि मैं अच्छा ज़्यादा नहीं लिख सकता इंग्लिश में, लेकिन उसकी स्टोरी अच्छी है. He is able to tell a good story. Storytelling is an art. Gripping story बनाना. तो बेस्ट सेलिंग बुक हैज टू बी फिक्शन में, तो इट हैज टू बी अ गुड स्टोरी. अगर मैं अच्छा लिखता हूँ लेकिन मेरी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, मतलब मैंने कैरेक्टर अच्छे नहीं बनाए, सस्पेंस अच्छा नहीं बनाया, तो मेरे अच्छे लिखने का आइडिया फायदा नहीं. सो आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग आई स्टिल हैव टू इम्प्रूव इन माय स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज. सेकेंडली, मसाला बुक और बेस्ट सेलिंग बुक कैन बी अ बुक which is suddenly current times में popular है. जैसे धोनी रिटायर हो रहा है, आपने धोनी की बुक सबसे पहले निकाल दी, so obviously it will be popular. Best sellers depend on quality, depend on sensationalism, and at time it depends on the topicality कि आजकल क्या टॉपिक ज़्यादा चल रहा है. जब हम लिखते हैं तो क्रिटिसिज्म भी होता है कि क्या लिख दिया, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ. ये बहुत होता है. So how to handle that criticism? So that आप तो इसलिए नहीं लिख रहे. बिल्कुल. That happens when you are writing something more powerful. So luckily मेरे जो columns हैं, मेरी जो books हैं, वो feel good type है. उसमें किसी को dispute नहीं. But once I wrote in my column about golf. Right. But if you get criticism for what you believe in, you have to hold your stand. Right. You cannot buckle कि अच्छा हाँ नहीं ये गलती हो गई. नहीं, you take a stand. Have you thought of some new book? Is there anything in a row for what we should wait? Yeah, 2 books are in the offing. One will be another collection of my column. It's Still a Wonderful Life में 120 pieces हैं. उसके बाद I've written another 40. ये 120 जब हो जाएंगे तो ये भी आएगी. But the next one is also fictional tale. I'm going back to writing a novel. And this is about a young officer, how he encounters problems, how he gets into a different world from a simple background, civil services, power. So little humor भी है उसमें, but उसमें एक showing the true life of an officer. So हम लोग जो जैसे I resigned from the IAS, I cannot write something which is totally reality about the IAS because I don't want to give any secrets from the government of your career.
but I can write fiction. So I make a character and he goes through experiences of civil services, so you get the idea. I'm writing that. What is your message for the potential authors coming up? Very good point. So potential authors, you have to be strong-minded. Don't be weak-minded. मतलब कि नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं सोचना. Back yourself. Practice a lot. Practice makes perfect. If you practice writing short pieces, then you will become an author one day of a book. Plus कई लोग collection of poems, collection of short stories भी करते हैं. वो भी that is one way to become an author, which is fine. Thirdly, never hold back. You felt like writing something but you didn't have time, you got busy watching a movie, उसको जाके लिख लो उस time. Lastly, I think writing is also therapy. If you write even one page, you unburden yourself. So write for that. And if you write a book, it is joyful. I often say that I have a baby in my hands when a book comes. You feel that good. Thank you, sir. Thank you for being on the show. Thank you, Mandeep. Always a pleasure. And I'm very delighted to be talking to your audience. So ये थे हमारे साथ आज मिस्टर विवेक आत्रे, ex-IAS officer, and he is an author of 4 books, coming up with 2 new books very soon. और आई होप आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ आज सीखा होगा, आप इंस्पायर हुए होंगे राइटिंग के लिए. आप चाहे एक पेज रोज का लिखिए, ये मैंने आज के एपिसोड से जो मेरा टेक अवे रहा है. And I hope to see sir very soon again on my show on a different topic. And thank you so much for watching Mandeep Kaur Tangra show.